So let us start. I hope handwriting will be visible to you. Okay. देखिए दवा देखो तो ऑलरेडी ओएस क्वेश्चन रे अलगा एग्जाम रे भी पढ़ी जाए कि एक्सेस बॉडी रे नाइट्रेट कंपोजिशन थिले को टाइप ऑफ रोग हुए that name of the rogo is blue baby syndrome. So in that case it is a list of all the harmful chemicals are present. को chemical body रे excess गले को प्रकार रोग होबो. So that type of rogo is mentioned here. Cadmium अधिका खाइले इटा और आउच दांत गोटा गोटे लेयर बसिकी हलदिया दांत हो जाए सेटा को हमें बोस्टानियन लाइन्स बोली कहूचे. से बोस्टानियन लाइन्स कोटू हुए ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ लेड. आज भी एग्जाम रे ए क्वेश्चंस बहुत तरह आसे. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हेथिला पर्टिकुलर को केमिकल एक्सप्लोजिव रो हेथिला मिथाइल आइसोसाइनेट. Okay, let us start. So whenever we go for conventions, हमारो एनवायरनमेंट कन्वेंशंस इंपोर्टेंट लीडिंग कन्वेंशंस जो अच्छी देखिए वेटलैंड होची. वेटलैंड रो रिलेटेड दीटा कन्वेंशन. सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जोटार फुल फॉर्म कोन 2020 रे आस्तेला. सीबीडी रो हमरो दीटा कन्वेंशन नगाया आ गोटे होची कार्टेजिना. सेमिति परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कोन सेटा देखिबा ता रिलेटेड हमरो এই তিনটা কনভেনশন को मिसे की हमें कहूचे सिस्टर कन्वेंशन. And one more extra convention is also present, that is called Bomako convention. Simiti ozone related we have three major convention names. So co convention related कौन तार पर्पस ए सब जिंस आसन तमे देखि नबा. So around 11 conventions have been mentioned here. So देखि दबा को कन्वेंशन कोटा और एनवायरनमेंट रिलेटेड हमर जेते भी सब इंपोर्टेंट डेज ए पांचटा होचंदी बहुत बहुत इंपोर्टेंट डेज. आपण मान को काम होची जेमति 2 फेब्रुअरी वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे. यू हैव टू फाइंड आउट 2022 रो थीम कोन एंड 2021 रो थीम कोन. जेतो हमें 2022 रो एग्जाम दबा को जाउचे वी हैव टू रिमेंबर द थीम ऑफ दिस ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर थीम. Okay, so दीटा जगह थीम ए पांचटा पांचने 10टा थीम you have to overlook, automatically it will be come up. आसन देखियो. So the first one is related to wetland. So wetland related हमारा दीटा convention. So what is this wetland? First of all हमें टिके देखि नबा. Just have a quick look. हमें जानी छे कि जेतबेले दीटा इकोसिस्टम पाखा पाखी थिबे तांका मझिरे जो ट्रांजिशन जोन ए जोन टाको हमें कहूचे इकोटोन. सो देयर आर वेराइटीज ऑफ इकोटोन. बहुत वेराइटीज ऑफ इकोटोन रही परिबे. फॉर एग्जांपल कोन वेराइटीज ऑफ इकोटोन रही परिबे सेटा हमरा आ गोटे स्मॉल टॉपिक इन द इकोटोन एठी कवर अप हेची. देखंतु इकोटोन इट मे बी व्हाट इट को इकोटोन जदी आपनकर गोटे जोन होची डेजर्ट आ गोटे जोन होची फॉरेस्ट. इन दिस वन गोटे डेजर्ट गोटे फॉरेस्ट तो सही इकोटोन को हमें ना दबा ग्रासलैंड. सो दैट इकोटोन में बी ग्रासलैंड, मे बी एस्चुरीज, मे बी मैंग्रोव, मे बी मार्शलैंड. तो एमती भी क्वेश्चन आसी पारे. द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल जोन एंड मैराइन जोन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मैंग्रोव. सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि इकोटोन को नहीं कि हमरो वेटलैंड डिस्टिंग्विश होची. Now in this wetland why we should study? Because it's very simple thing. अरे ओके. सो जब हमें वेटलैंड देखो सो वी नीड कि हमरो इंडिया रे वेटलैंड को ऑल ओवर वर्ल्ड रे हमरो केतेटा वेटलैंड अछि, को जगह रे वेटलैंड अछि. या पई जो जगह ईरान रो गोटे सिटी होची रामसर एठी जो कन्वेंशन डील साइन करा हितला तो सेई कन्वेंशन ना पड़ी गला रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन रो काम कोन ना एंटायर पृथ्वी रे
भलो इकोसिस्टम मेंटेन करबा पई जो जो जगह रे भी भलो भलो वेटलैंड अछंती सेटा को वेटलैंड डिक्लेयर करा हेले ताको प्रोटेक्ट करि परिबा वेटलैंड प्रिजर्व कले हमरो एनवायरनमेंट को भी सेफ्टी हबो सपोज दिस इज द वेटलैंड क्रिएटेड एज ए वेटलैंड वन किंबा रामसर कन्वेंशन वन एटा गोटे वेटलैंड साइट डिक्लेयर हैला तो जदी एटा डिक्लेयर हे गेला हम एटा को प्रोटेक्ट करिवा कंजर्व करिवा रेगुलेट करिवा सो दैट एटा मिसप्लेस न हो एथरे जते कि ऑर्गेनिज्म से माने ग्रो करंतु गछ पछ बडू गोटे इकोसिस्टम भलो चालू सो ओनली आइडेंटिफाई करा हबो डिक्लेयर करा हबो हां भाई एई भुवनेश्वर जगहटा को वेटलैंड डिक्लेयर करा गला it comes in Ramsar convention so whenever you will see a question of Ramsar related convention it is only identification of wetland so आज का डेट रे हमर इंडिया रे केतेटा वेटलैंड अछंती प्रति वर्ष बढ़ी बढ़ी चले किछि किछि बेले बेले ऐड ऑन होंती सो रामसर रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन हमर तीनिटा जिंस मन रखिबे रामसर रे आज का डेट रे हमर केतेटा वेटलैंड अछि टोटल 64 which is the 64th wetland of India सातकोशिया गंडो इंग्लिश रे जॉर्ज सातकोशिया जॉर्ज आम इंडिया रा प्रथम रामसर कन्वेंशन कोटा ना चिलिका लेक इंडिया रा सबुठु बड़ बिगेस्ट दैट इज आल्सो चिलिका लेक आ सबुठु स्मॉलेस्ट रेणुका वेटलैंड सो ए तीनिटा जगह जिन समूह रखि देछि आपण माने देखि परिबे रामसर कन्वेंशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड biggest and first is Chilika, smallest is Renuka. एबे अच्छे 64. Next, so this is the target कि हाँ yes wetland हमारा है गला, but wetland खराब है गला कि गोटे इटा suppose wetland this is a wetland, ए wetland ता identify करिवा रामसर, आउ रामसर रो किछि काम नहीं, किंतु जदि ये wetland ता खराब है गला कि deteriorate होची कि आगो को दिना में deteriorate हवारा परिस्थिति रे अच्छी कि बहुत खराब कंडीशन रे उभय भी हेई पाउची सो एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इफ इज नीडेड देन दैट वेटलैंड को गोटे नोटिफिकेशन बार रे अणा जीवो सो दैट नोटिफिकेशन बार और दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड इज नोन एज मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड सो दैट फॉर इवेंट इट इज कॉल्ड मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड सो फ्रेंड्स एठी हमें दीटा क्लियर जिंस बुझिले वेटलैंड टे डिक्लेयर करा हबो रामसर कन्वेंशन रे किंतु गोटे वेटलैंड डेंजर जोन रे अच्छी बोली हमें किम जानिबा सेटा मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड को दिया हैछि सो मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड रो डेफिनेशन लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स whose characteristics are changed or are changing or likely to be changed तो ए मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड रे हमर ओएस रे एबे टोटल 4टा क्वेश्चन कंटीन्यूअसली रिपीटेडली आसिलानी 4टा क्वेश्चन रिपीटेडली इट इज कमिंग ओके सो हमें देखिबा क्वेश्चंस कोठी हमरो मॉन्ट्रिएक्स किमिति प्रकार हमरो क्वेश्चन आसुची दैट आल्सो वी आर आल्सो गोइंग टू सी ओके ठीक अछि गटे देखि दबा हमें आ टिके कवर अप कला परे मो टिके क्वेश्चंस देखे देबी बट एनीवे गोटे हमें गोटे झलक देखि परिबा कि किमिति क्वेश्चन आसी पारुची okay if you will see this question number 3 direct question is which of the following in India is enlisted in Montreal's record तो ए भितरो कोटा Montreal's record रे enlist करा जाइछि okay so इमती डेफिनेशन टाइप रो भी डायरेक्ट पळे आसे तो इथर आंसर होछि क्यूलाडियो नेशनल पार्क कार गोड अनम्यूट हेछि म्यूट कर दियो तो इठी मो Montreal's record टा पूरा कहि दोछि तो Montreal's record रो कंडीशन होछि या आम इंडिया रे केतेटा वेटलैंड डेंजर जोन रे थिले एक्चुअली तीनिटा थिले गोटे होछि चिलिका लेक गोटे होछि क्यूलाडियो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान आ गोटे होछि लोकथक लेक ऑफ मणिपुर किंतु चिलिका लेक भलो परफॉर्म कला हेतबे चिलिका लेक को डेंजर जोन रो काढी देइछंती तो वर्तमान हम इंडिया रे केतेटा मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड अछंती दीटा गोटे होछि क्यूलाडियो नेशनल पार्क लोकथक लेक सो ए कंडीशन को देखिले हमें जानि परिबा कि मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड रे हमरो की आछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली क्यूलाडियो नेशनल पार्क क्वेश्चन इमिति भी पडिछि हमें देखैबो कि मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड रे को लिस्ट टाको हमें बाहर कर दिया जाइछु चिलिका लेक सो लाइक दैट दिस क्वेश्चंस आर कमिंग ओके हमें क्वेश्चन सेटअप टिके कवर अप कर देला परे इजीली वी विल गो थ्रू इट नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लाइड्स तो लेट मी जस्ट रिवाइज वेटलैंड रिलेटेड डेटा कन्वेंशन देखिले रामसर एंड मॉन्ट्रिएक्स नाउ लेट अस कम टू दिस सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इज CBD Convention on Biodiversity
यार फुल फॉर्म कोन 2020 रे डायरेक्ट पडिथिला सो एठी मेंशन करा है कि थर्ड एम इज रिलेटेड टू व्हाट सो वेयर इज दिस थर्ड एम इज कमिंग कि जेतले आपण माने बायोस्फीयर रिजर्व पडिथिबे बायोस्फीयर रिजर्व ए बिग बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स गोटे होची कोर जोन गोटे होची बफर जोन आ गोटे होची ट्रांजिशन जोन लोक माने घर करिके रहिबे चाष करिवे ए जो लोक माने जो तांका नित्य काम करिवे ए बायोस्फीयर रिजर्व को जोन रे करिवे ट्रांजिशन जोन सो ए जोन इज रिलेटेड टू पीपल्स वर्क सो एठी लोक चाष भी करिवे ठीक अछि भाई करो चाष हमु कोन दरकार तो चाष कला बेले जदि सपोज एमती किछि आंब अछि आंबर किछि एमती स्पेशल केमिकल पकेले कि आंबर टाकुआ आंब आंबर टाकुआ छोट है कि आंबर मांस बड़ हो गला तो एटा कोन हैला गोटे से आंबर जेनेटिक चेंज हो गला तो एटा बहुत भलो जिंस तो जदि ये भलो जिंस पाइलो ए आइडिया टा दया करी कि बाहर देश को प्रचार करिया दरकार कि एमिति भाई चाष कले एमिति बेनिफिट भी मिली पारे ए जिंसटा को आमे कहूचे दिस इज नोन एज नगाया प्रोटोकॉल this concept is known as Nagaya protocol so let me first tell you कि आमे जो पढुचे एटा CBD रो third aim so third aim is transition zone रे any kind of activity which is beneficial the idea can be regulated to the outer country तो जदि आमे suppose agriculture कलु एटा बहुत भलो चलला ए आइडिया टा को आमे शेयर करिवा दरकार so ए शेयर करिवा को आमे ना देछे नगाया प्रोटोकॉल किंतु शेयर करिवा सर फॉर एग्जांपल कॉटन उत्पादन चलछि किंतु ए कॉटन रे जो बैक्टीरिया अछि से बैक्टीरिया गोटे लागि जाय से बैक्टीरिया को हमें मारिवा पई हमें कॉटन रो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करछे बीटी कॉटन सो बीटी कॉटन यूज हला परे बहुत कॉटन डिस्ट्रॉय रो बंची गले तो हमको एंश्योर करिवार अछि कि भाई कॉटन को जो बैक्टीरिया मारुथिला से बैक्टीरिया को मारिया पई हमें एई भलिया कॉटन यूज करूचे तो हमको एंश्योर करिवार अछि कि हमें जो नुआ वेराइटी ऑफ कॉटन यूज करले ये लोक मानक देह भितरे किछि हार्मफुल इफेक्ट न दो सो कॉटन नॉर्मल थिला कॉटन रो जेनेटिक कैरेक्टर्स हमें चेंज कर देले बीटी कॉटन दिस इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ता माने होची या कि हमर जो थर्ड एम थिला ट्रांजिशन जोन एठी तमे भाई चाष करो आइडिया बाहर को दियो दैट इज कॉल्ड नगाया प्रोटोकॉल किंतु जदि किछि जिंस लोक मानक हार्मफुल इफेक्ट कराए देह को खराब कराए तो सेई भलिया जिंस को केमिकल उडा देह को खराब करेबो सेटा आइडेंटिफाई जे करे दैट कंपोनेंट इज नोन एज कार्टेजिना प्रोटोकॉल तो कांसेप्ट आपण माने बुझी गले द क्वेश्चन जिमिति लैंग्वेज रे पचारिबो से भलिया वे रे आपण लिखिबे तो देखि दबा हमें डेफिनेशन ता हमें किमति देखि पारुचे कांसेप्ट बुझले माने एति के भितरे आपण क्वेश्चन आसीबो नगाया प्रोटोकॉल ता माने कोन टू एक्सेस genetic resources and sharing benefits derived from such activities so eta actually powerful note otherwise जो जितने भी लंबा सेंटेंस अच्छो अपन को ए वर्ड टा देखिया को मिलिबो शेयरिंग बेनिफिट्स एंड शेयरिंग द म्यूचुअल रिजल्ट्स so शेयरिंग बेनिफिट्स रिलेटेड टू नगाया प्रोटोकॉल कार्टेजिना प्रोटोकॉल कोन कहउची जदी ह्यूमन हेल्थ औ एनवायरनमेंट को जदी हैम्पर करिया पे किछि हार्मफुल नेगेटिव पोटेंशियल इंपैक्ट अछि सेटा को डिस्ट्रॉय करिवा फाइंड आउट करिवा तो को जिंसटा ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को हार्मफुल कराए सेटा किए बाचे that component is known as Cartagena protocol that means they have to provide the safety related to bio so that is why genetic resources रे third aim from CBD amara dita hegala benefit share karo nagaya protocol and kichi harmful effects taku protect kariba in Cartagena protocol both related to biosafety. Next, persistent organic pollutants. So in short, they are known as POPs, persistent organic pollutants. ना कौन होची ना मैं suppose agricultural field रे हमें चाष करछे हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दोचे फर्टिलाइजर दोचे कोन हमें सब फर्टिलाइजर दोचे नो जो फर्टिलाइजर ता गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किबा रेडी टू स्प्रे
because varieties of chemical fertilizers अच्छंती सेटा को स्प्रे कर देले हार्मफुल इफेक्ट भी दबो चाष खराब हबो लोगों को ह्यूमन इंपैक्ट खराब करेबो एनवायरनमेंट खराब करेबो तो कौन एमती इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्री केमिकल मार्केट रे अवेलेबल अच्छी व्हिच आर अप्रूव्ड टू यूज सब जिनस यूज करि परिबानी जो केमिकल्स सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन एंटी पोल्यूटेंट अच्छी जोटा ऑर्गेनिक वे हमको हार्मफुल कर परिबे वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट सो हाउ व्हाट और पोल्यूटेंट्स आर अलाउड दैट इज कॉल्ड persistence in limited quantity some pollutants are allowed so what are those so जदि हमें insecticide pesticides यूज करूचे को उडा लिस्ट रे अच्छी यूज करबा सही जिंस हमको की आइडिया दबो स्टॉकहोम कन्वेंशन जेते भी सब केमिकल्स हमें ए पीओपी रे पढ़िबा अनदर एग्जांपल इज ना फॉर एग्जांपल हमें किछि मेडिसिन किनिले जो मेडिसिन किनुचंती सेथरे हमरो किछि रेड कलर स्ट्रिप थाए बहुत बड़ा रेड थाए तो रेड कलर माने डेंजर आउ टिके बड़ा रेड माने बहुत मैक्सिमम डेंजर इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से भलिया मेडिसिन दिया होबनी लोक खाइले मरि जिवे तो एई जो सब हाजार्डियस केमिकल्स अछि एई हाजार्डियस केमिकल्स उडा को आइडेंटिफाई किए करे रॉटरडैम कन्वेंशन तापरे ना सपोज को कंट्री कौन कला किछि पेंट हे गेला बैटरी हे गेला केमिकल रे एक्सप्लोसिव बम तयारी कले टॉक्सिक वेस्ट एवडा सब जी जो कंपनी तयारी कले एवडा जेबे यांकर एक्सपायरी डेट हे जे धीर किनी ने की फॉर एग्जांपल यूएसए धीर किनी ने की इंडोनेशिया समुद्र रे गळे दोछि तो यूएसए रो जिंस तुम यूएसए रे बैन करो तुम याड ने की यांक समुद्र के नष्ट करछो सो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ट्रांसबाउंडरी डिस्पोजल ऑफ hazardous wastes एवडा को चेक करेबो किए चेक करिवो बेसेल कन्वेंशन सो ए तीनी टाइप ऑफ कन्वेंशन को हमें ना देचे सिस्टर कन्वेंशन बट ए तीनटा जगह कन्वेंशन रे गोटे प्रॉब्लम थिला कि रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल कोठी करा जीवो हेई नथिला माने कि सपोज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट बाहर कला सेही वेस्ट उडा जदि हमें सबमरीन जदि हमें समुद्र भीतर रखि दबा सो दैट इज अ वेस्ट किंतु यूएसए की डेवलप्ड कंट्रीज उडा सब अलगा अलगा सब छोटो मोटो आइलैंड्स भीतर को जाई कि छाडी दउचंती सेठी डंप कर दउचंती सो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट कोठी हबा दरकार या ପାଇଁ जो कन्वेंशन दैट इज कॉल्ड बोमाको कन्वेंशन तो आपण क्वेश्चन एमदी आसी पारे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल ପାଇଁ को कन्वेंशन बोमाको कन्वेंशन किंतु जदि क्वेश्चन रेडियो एक्टिव वेस्ट नथिबो अलगा वेस्ट डिस्पोजल देन आंसर इज बेसल कन्वेंशन ओके सो लाइक दैट दिस थिंग्स आर कैटेगराइज्ड तो ए तीनटा बोलसे देखि नेबे फॉर एग्जांपल इन रॉटरडैम देयर इज अ इवेंट कॉल्ड डीडीटी तो डीडीटी सपोज गोटे पोखरी अछि पोखरी रे डीडीटी स्प्रे कले पोखरीटा सफा हो जाए किंतु से जो माछ भीतर थिबे से माछ डीडीटी खाइले से माछ डीडीटी खाइले माछ फुलिले चिलो खाइला से डीडीटी माछ भीतर गला से माछ भीतर आमे लोक भी खाइलो आम देह को भी डीडीटी गला ताको चिलो खाइला चिलो जो खाइला चिलो भीतर डीडीटी गले चिलो ओडा नेक्स्ट जनरेशन को चंदा चिलो बाल्ड चिलो एवडा सब बाहरी चंदा नथिबे सुंदर देखा जीवेनी सो दिस काइंड ऑफ इवेंट इज आल्सो डेंजरस तो केते अमाउंट ऑफ डीडीटी परमिट करबा कथा सो दैट आइडिया इज गिवन इन रॉटरडैम कन्वेंशन सो लाइक दैट दिस थिंग्स आर present okay so just I repeat Stockholm Convention insecticide pesticide Rotterdam Convention जो hazardous chemicals अच्छे सेडों को रेगुलेट करेबो बेसल कन्वेंशन केमिकल्स उडा को डिस्पोजल बट बोमाको कन्वेंशन रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल कोठी हबो सेटा देखिबो तो फ्रेंड्स एठी हमें तीनटा पॉइंट देखि नेले गोटे हमें देखिले वेटलैंड रिलेटेड रामसर कन्वेंशन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी थर्ड एम जोटा ट्रांजिशन जोन रे अछि जदि भला आइडिया अछि नगाया को जे स्प्रेड करो किंतु जदि बायो सेफ्टी ऊपर क्वेश्चन आसे ताले कार्टेजेना प्रोटोकॉल persistent organic pollutants हमें तीनटा और चारटा देखिले रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल बोमाको कन्वेंशन ओजोन ओजोन ऊपर हमरो तीनटा कन्वेंशन अछि फ्रेंड्स तो देखि नवा ओजोन भितरे कोन अछि सो ओजोन रिलेटेड इवेंट ये कहूची हमें जानी छे हमरो वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अछि and ozone is present in stratosphere that also we know so if this is the layer of ozone eta hochi ozone layer केते सब इंडस्ट्रीज रो हार्मफुल केमिकल्स स्प्रेड आउट होची वेरियस इनफिनाइट नंबर ऑफ केमिकल्स we have to protect our ozone layer
our first target is we have to think of this protection layer. We have to go for protection of this ozone layer. Friends, आपण मानको मने थिबो ए पृथ्वी रे केते नष्ट होची एनवायरनमेंट केते दुखर कथा हमें मार्च मासर लास्ट संडे 8 रु 9 बस की भें भें कांदीबा दुख प्रकाशित करिया दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अर्थ आवर लाइक दैट हाउ बेस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर ए कॉन्सेप्ट हमको गोटे कन्वेंशन कहूची वीणा कन्वेंशन सो वीणा कन्वेंशन तो फ्रेंड्स एटा क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ी आ पिला माने भूल भी करिसेंती बिकॉज़ या पर आ गोटे कन्वेंशन जोटा में पढुचे ता ना होची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो दिस इज रिलेटेड टू आल्सो ओजोन लेयर किंतु एठी पिला माने भूल कोन कर दउछंती वीणा कन्वेंशन रा काम होची कि भाई ओजोन को प्रोटेक्ट करो केमिति करो हमें जानिनु we have to think various prospects how best we can protect our ozone किंतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहूची कि हमरो जो ओजोन लेयर अछि कि there are various harmful chemicals like CFCs भी जाउची तो CFCs उडा बहुत एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ओजोन रे बहुत डिस्ट्रक्शन कराए सो CFC हमरो कोठु बाहरे एसी रु बाहरे फ्रिजेस रु बाहरे माइक्रो ओवन रु बाहरे and these gases are very poisonous. So what best we can do कि AC माइक्रो ओवन ए सब जिंस आउरी लिस्ट आर मेनी थिंग्स तो जो जिंस रे हमें CFC यूज करूचे एटलीस्ट हमें CFC यूज न करी कि HFCs यूज करिबा सो दैट CFC जदि 10 वर्ष रे हमको हैरान करे HFC से एटलीस्ट हमको 25-30 वर्ष लगे सो द हार्मफुल इम्पैक्ट of HFCs is very less with comparison to the सांघातिक CFC. So that means जेते भी जिंसो जोड़ा CFC गैस रिलीज करूचंती सही जिंसो रो अल्टरनेटिव हमें बाहर करिवा HFCs. This concept is given in Montreal Protocol. So ओजोन पे हमें दीटा कन्वेंशन देखिले फ्रेंड्स गोटे होची वीणा कन्वेंशन only to protect ozone layer and another is Montreal Protocol. Montreal Protocol is related to replacing CFCs by HFC. ठीक अछि बट HFC एटा भी तो हमको हार्मफुल इफेक्ट करे हां ये CFC 10 वर्ष रे करबो ये 30 वर्ष रे करबो बट इफेक्ट तो करबो सो the best way is we have to again replace these HFCs. By 2030 we have to replace these HFCs and this idea is given in 2015 and that convention has taken a name Dubai Pathway Convention. एटा को हमें ना देचे Dubai Pathway Convention. Okay, so the idea is very clear. वीणा ओजोन को प्रोटेक्ट करिवो Montreal substitute of CFCs Dubai pathway alternative of HFCs. So remember friends हम एटी केतरा कन्वेंशन देखिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ ऊपर आउ दीटा 10 11 so ए 11 टा कन्वेंशन केमिति भी एग्जाम रे बुली बंकी के आसी पारे you just have to think कि किमती आपण घोषि चंदी मने रख चंदी just very simple से रिलेटेड आपण आंसर करि परिबे एटा आपण कहि देछि इंपोर्टेंट डेज थीम यार मन रखिबे 2022 2021 दीटा थीम मन रखिबे देखि देबे जस्ट हेडक्वार्टर्स कोटी कोटा हेडक्वार्टर अछि CMS रो फुल फॉर्म भी आसी पारे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज बॉर्न साइट्स वाशिंगटन DC एटा सब करेस्पोंडिंग रे लिखा अछि सो नो नीड टू स्पीक अप ये एटमॉस्फेयर एथरे भी एबे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची आपण मानकर ओके तो ये एटमॉस्फेयर तो आपण मान सब पढी थिबे जस्ट मो 2-3 मिनिट्स रे आपण टिके पैकअप करे दोची ट्रोपोस्फियर लोएस्ट लेयर सबोठ डिस्टर्ब लेयर ऑल वेदर बुलेट वेदर बैड वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज द मोस्ट डिस्टर्ब लेयर इज ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर रो जोडे क्वेश्चन गोटे आपनकर ओजोन लेयर थाए आ स्ट्रेटोस्फियर इज द कूल एंड काम लेयर मेजोस्फियर रे कोन होची एटा होची कोल्डेस्ट लेयर आ एथरे जो तारा उल्टा तारा ना कोन सेटा मेटर्स कैन बी सीन thermosphere is the hottest layer ionosphere is also related to thermosphere both are partially same thing ionosphere ho ki thermosphere ho it is satellite communication हुए exosphere outermost layer तो एई थरे हमको ऐसे क्वेश्चन पचारे दिए stratosphere is present between which two layers lollipop question
So यार आ गोटे advanced question होची stratopause present between what? So whenever question is related to any layer related to pause, so pause layer होची दीटा layer मझिरे जो मझी layer is called pause layer. जदि stratopause पचारला ता माने definitely हमरो जदि आपन को पचारला where is stratopause located? तो stratopause माने strato तो तळ layer ता थिबो stratosphere ऊपर लेयर टा थिबो ता ऊपर जहां भी लेयर थिबो सो स्ट्राटोपॉज प्रेजेंट बिटवीन स्ट्राटोस्फियर एंड मेजोस्फियर तो एटे सब देखिले कोन होची ना जते भी सब एरोप्लेन हो कि फायर फाइटर इंजन हो ए माने 100 किलोमीटर जाहि जाई परिबे ता ऊपर को जाई परिबेनी बिकॉज़ एयर फाइटर जेट्स सेमन को इंजन होची टर्बो इंजन सो दैट इज व्हाई 100 किलोमीटर इज द बैरियर जोटा को हमें टर्बो पॉज लेयर भी कहूचे साइंटिस्ट किए बाहर करथिले कलमान लाइन भी हमें कहूचे सो टर्बो पॉज is also known as Kalman line is also known as 100-kilometer line present between which two layers even present between mesosphere and thermosphere. Internal structure of earth ए जो structure आपण देखुछंदी ए structure रे ही आपण को अराउंड 5-6टा क्वेश्चन पड़ी जाए बारंबार क्वेश्चन पड़े क्रस्ट रे हमर थाए सिलिकॉन एल्युमिनियम मेंटल रे थाए सिलिकॉन मैग्नीशियम कोर रे थाए हमर छुरी NiFe nickel and iron this you know second question it will come the thinnest layer in the earth crust सबुड thinnest और weakest layer होची asthenosphere present between crust and mantle it is solid this is also solid but outer core it is liquid and this is molten discontinuity थाए जिंदे क्रस्ट रो हमें दीटा करिवा अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट मेंटल को दीटा सेपरेट करले अपर मेंटल लोअर मेंटल कोर को दीटा करले आउटर कोर इनर कोर सो जोठ भी हमें सेपरेट करिचे देयर इज ए discontinuity every discontinuity carries a name so chief minister Ragi ji Velo so whatever your way of shortcut you can remember so इमती क्वेश्चन में पड़ी जाए कि rapidity discontinuity present between which two layers so rapidity present between mantle upper mantle and lower mantle what is the discontinuity present within the core so within the core the discontinuity is Lehman so like that these questions are coming okay 2019 रो ओएस क्वेश्चन ने गोटे पढ़िथिला who is the father of biodiversity okay so पिला माने किछ कंफ्यूजन ने biodiversity hotspot कैन एटा मु क्लास रे पढैथिली तो क्विकली एटा मने भी रखि देथिले पिला माने किछ करिथिले आई रिमेंबर सो बायोडायवर्सिटी रो फादर 2019 रे पढिथिला एड्रो विल्सन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर सो रिलेटेड टू दैट ए तीनटा रो फादर किए इकोसिस्टम थांसली इकोलॉजी रिमेंबर हैकेल नेट रे देखिबे आपन को अलग अलग मिलिबो डोंट गेट कंफ्यूज्ड किंतु इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्र एठी डीईओ राम डीओ आगोटे राम डीओ आगोटे ऑप्शन ने आपन को रामदेव मिश्र भी थिबो सो रिमेंबर राम डीओ इकोसिस्टम इकोलॉजी द हेड फादर इज ओडुम ओके जिमती हमें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन और एल्स नॉर्मन बोरलैक तो सेमिति फादर ऑफ इकोलॉजी पचरचे माने हैकेल ही लिखिबे unless and until India रो पचरचे रामदेव मिश्र then only you have to go for answer रामदेव मिश्र ecosystem हमें जानी चाहिए ecosystem is nothing but the relationship between living and non living living हमें मनीषो बंचिचे non living is like water हमें पानी पीवा बंचिवा so how the relationship is how the relationship is established between living is Manisha or tiger and non-living is water. So this relationship is of 6 types. किंतु ए 6 types रे हमरा केवल mutualism रो क्वेश्चन आसुची in mutualisms we have our best example is lichens the relationship between algae and fungi एठी आपण देखि परिबे it's very simple thing algae and fungi the relationship is very unique algae it's a plant fungi or corals is an animal algae the plant will prepare its own food and corals is seeking help
ए एनिमल टा को हेल्प मागुची कि भाई तू मते खाद्य दे and in return I will provide you the shelter. So corals याटो खाद्य टिके पाइला, ये corals याको safety देला. So mutually they have agreed. So these जनों का relationship is positive. He is getting, it is getting benefited, it is also getting benefited. So that question is related to corals. तो corals ऊपर भी friends हमारा चारी पांचटा point अच्छी. आगु को point लिखी हमें देखी नवा. So like that another relationship is mycorrhiza, roots and fungi. So these are the famous examples related to mutualism. We have other examples for this, but in short time, I don't want to involve all this. Just try to understand. So ecosystem, father is Thansley. Six type of relationship it has established. And the famous discussion of interest is of mutualism. Okay. Got a concept upon the ecological habitat. Ecological habitat, ecological niche. Now, for example, bagha joti ruhe, that is the home, that is known as ecological habitat. But what is the profession of bagha? It will go and hunt out. That profession is known as ecological niche. So depending upon the language of question, you have to choose which answer you have to write. Either ecological niche being professional or home is being habitat. Now this ecological niche is of two types. One is fundamental niche and is released niche. So एथरे हमें एटा केमती बुझी परिवा released. Fundamental is a theory, released is the practical. Now for example गोटे समुद्र पाखरे एटा समुद्र पाखरे एमती सब जिंस अछि एटा बॉटम टा समुद्र से माने तळ पोर्शन टा. So it is suppose there are some red crabs. There are some red crabs. And for example, here eta tike sea shore upper area ta, there are some blue crabs. So fundamental niche gote patile, fundamental niche agote release niche. Fundamental is the theoretical concept and this is the practical concept. Now how these two are separated? A blue concada, they have the territory domain of this range. So this is practical. This is theoretical. A nali concada, they have the sustainable development, they can attain their food, they can stay happily. This is the zone. So this is a theoretical concept that this is blue zone, this is red zone of concadas. Now jodi khadya shortage padla ki kichi excess darkar hela to hei pare कि ये ब्लू कंकड़ा भी दरकार पड़ले खाद्य को शॉर्टेज हेले ए ब्लू कंकड़ा भी एई जाय आसी पारे आ एठू खाद्य संग्रह करी कि जाई पारे. तो जदि सी आसी कि खाद्य संग्रह कर को जाईची ताहले एटा गोटे हमें कहि परिबा दिस इज अ थियोरेटिकल कांसेप्ट बिकॉज़ वंस वी हैव सीन कि हां खाद्य इंबैलेंस की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पाया पई हमको गोटे जोन रो गोटे कंफर्ट जोन रो गोटे एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन एक्स्ट्रा डेंजर जोन को जीवा को पड़े. सो जदि हमें जाउचे सो सबु बेले जाउने दरकार पड़ले जाउचे. So that becomes a theoretical concept. So this is the difference between these two. So theoretically, practically it says this is the zone, this is the zone. But theoretical, if possible, they have to go on, move on. So depending upon the language, you have to choose your answer. I already told you. Now, ecotone. Ecotone हमें जानी चाहिए transition zone between two ecosystems, and depending upon the varieties of different things, you have to choose your answer. Mangrove, terrestrial, marine. जदि अपन को salt water and fresh water थीवो, it is estuaries. I mean, we know India रे west flowing rivers they form estuary. Famous questions are Narmada and Tapi. Okay, so like that. Now here, इमती गोटे question पढ़िथिला. A zone of tension हमें कहा को कहू. Now if you'll see this diagram, forest ecosystem, say this is the forest ecosystem. Very happily the forest is there. Similarly, desert ecosystem, see there is a desert area. So desert is having different things and forest is having different things. But ame jodi ei ecotone zone ko asuche, then we have to compromise forest joti saruchi, forest eti saruchi dhire dhire, a desert bhi asi dhire dhire saruchi. So jo jagare forest dhire dhire minimize hochi, our desert bhi dhire dhire minimize hochi,
ए जोन टाको आमे ना देचे जोन ऑफ टेंशन सो इकोटोन रो डेफिनेशन जहा जोन ऑफ टेंशन इज एरिया जोठी कि दीटा इकोसिस्टम मर्ज होला परे ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम रो जो क्वालिटी थिबो एठी क्वालिटी कंप्रोमाइज हैला एठी भी क्वालिटी कंप्रोमाइज हैला दीटा क्वालिटी कंप्रोमाइज हैला एठी गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट हैला सो दैट एनवायरनमेंट may not be suitable for existing ए दीटा तो एठी जो ऑर्गेनिजम्स थिबे एठी जो ऑर्गेनिजम्स थिबे they might be difficult to stay here so that event is known as zone of tension so zone of tension हमको कोठी देखिया को मिले in ecotone regions zone of tension ecotone region रे देखिया को मिले इकोलॉजिकल सक्सेशन आज आमे जो एते आगु को बढ़ी छे ए जो भुवनेश्वर रे आमे रहू छे ए भुवनेश्वर दिन हेता पारे कली एठी समुद्र पानी थिला कि किछि नथिला बेयर लैंड थिला किंबा एठी पूरा मरुभूमि थिला बट आज का भुवनेश्वर केते ब्यूटीफुल हेची सो ए भुवनेश्वर एक्चुअली प्रीवियस टाइम्स रे कोन थिला डेजर्ट थिला ना समुद्र भितर बुड़ी थिला ना बेयर लैंड थिला कोन थिला हमें जानने ना तेणु कोन किछि नथिबा किंबा कोन थिला हमें जानिने सेइठू आज का डेट रे ब्यूटीफुल वर्ल्ड ए जर्नी को हमें कहूचे कि किमती कोन ट्रांजिशन है कि दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हमें कोन थिलु आ कोन आज ब्यूटीफुल हछु ए भितरे चारिटा प्रोबेबिलिटी थाउची ए चारिटा प्रोबेबिलिटी होची 4 टाइप्स ऑफ सक्सेशन so that succession आगो को बढ़िवा succession is caused by जदि से succession एठी आगरु कोन थिले आ आजि भुवनेश्वर जदि से succession रे बायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व अछंती माने बायोटिक माने आमे हे गलु ऑर्गेनिजम्स हे गले डिफरेंट एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ताले सेही टाइप ऑफ एडवांसमेंट को आमे कहूचे ऑटोजेनिक जदि एबायोटिक फैक्टर्स को नै कि आगो को बढ़ाइछि ताले आमे कहबा एलोजेनिक So two things are there. The question empty पड़े से allogenic succession is carried out with respect to which of the following features. तो दीटा organism ना थी वो गोटे झेंटिका ना थी वो गोटे पानी ना थी वो तो definitely abiotic factors. तो सेमिति आज का डेट रे हमें जो गोटे big forest देखुचे so this big forest might be also due to two probabilities कि आइदर तमे पानी थाई कि फॉरेस्ट हेथिबो किंबा किछि बिना पानी रे किंबा लेस मॉइस्चर थाई कि भी गोटे जंगल हेई पर थाई सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट क्वेश्चन इज presence of water if some big forest leading towards a big forest in presence of water or with more moisture it is hydrach h for what h2o h for water h for hydrach zirarch in absence of water first we study heavy thila देखि दोचे और दीटा पे सरलानी कन्वेंशन रे हमें देखिले वेटलैंड रे रामसर मॉन्ट्रेक्स सीबीडी नगाया कार्टेजिना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पोल्यूटेंट्स स्टॉकहोम रॉटरडैम बेसेल तीनटा को कहूचे सिस्टर रेडियो एक्टिव वेस्ट पई बोमाको ओजोन पई हमें तीनटा देखिलु वीणा मॉन्ट्रियल दुबई important days what is the theme you have to find it out some few headquarters related to that atmosphere kimti kono question ase internal structure eta dekhile fathers who are the important related fathers to which domain and ecological definition between habitat and niche ecotone types of ecotone zone of tension ecological succession the carried out of a great ecological process okay so Asantu, ago बढ़िवा. I hope till now everybody is clear. Actually, this is a vast subject, so we are squeezing the syllabus, squeezing everything, just picking the important points to discuss. Ecological efficiency, also known as ACA, also known as energy transfer law or Landmann's law. तो इथरे आपण को देटा क्वेश्चन आसी पारे गोटे फूड चेन गोटे फूड वेब देखि नेबे कोटा कोटा फूड चेन गोटे इवेंट रे मल्टीपल ग्रुप ऑफ फूड चेन को हमें कहूचे फूड वेब तो एमती गोटे क्वेश्चन पढ़ी फूड वेब रो सो दैट डेफिनेशन ग्रुप ऑफ मल्टीपल फूड चेन इज नोन एज फूड वेब वेरी सिंपल ए क्वेश्चन वॉइस रे दी थर पढ़लानी अरेंज द सीक्वेंस छोटो होची डी तापरे सी एच एम एटा होची सीक्वेंस एटा सबटु छोटो तापरे आउटिके बडो आउटिके बडो आउटिके बहुत बडो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बिग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो these are the types of microorganisms stored in an event एटा क्वेश्चन दी थर पढ़लानी
इकोलॉजिकल पिरामिड जे एल्टोनियन पिरामिड आमे कहूचे ताको तीन प्रकार रो एनर्जी बायोमास नंबर्स। तो इथरे क्वेश्चन पड़े व्हिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इज एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास एटा अपराइट हे पारे तळको भी हे पारे। तो केमिति एटा तळको हैला जदि हमें मास कंपोजिशन देखिबा, मास माने मास ऑफ द मरला परे जो डेड बॉडी जो मास हुए, तो फाइटोप्लैंक्टन्स एमनका साइज बहुत छोटो ताठो और टिके बड़ जू आउ टिके बड़ फिश आउ टिके बहुत बड़ लार्ज फिश। सो बायोमास एतमे हमें ताको मास रू कैलकुलेट करूचे, अपराइट भी हे पारे डाउनवर्ड भी हे पारे। बट दिस नंबर इट मे बी ऑल अपराइट डाउनवर्ड और मिक्स्ड। तो मिक्स्ड कोन फॉर एग्जांपल ना देखो मझिरे टिके बड़ अछि चढ़ई बसचंती, एई चढ़ई उडा 10टा चढ़ई कोठी बसतिबे गोटे गछरे, तो एटा छोटो हैला। किंतु एई चढ़ई को खाइला वाला कार्निफर चढ़ई केते थिबे दीटा कि तीनटा, तो सेमाने भी ऊपर बसतिबे। ये दुई ये 10टा चढ़ई गोटे गछरे बसचंती। सो दैट वे द नंबर इज नॉट इवन, the number is not same, so number is changing, so that is why we have named it as mixed। तो इधर दीटा क्वेश्चन कि pyramid always upright is of energy pyramid, pyramid which is having all the proportions, even mixed pyramid, it is pyramid of numbers। बायोडायवर्सिटी रो E.O. विल्सन। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो फ्रेंड्स एटा में डिस्कस करिचे नॉर्मन मेयर। एटा भी मु आपन कहिछि कि हमर इंडिया रे चारिटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अछंती, वेस्टर्न घाट, हिमालयस, and this fourth event is known as a group of many islands including Andaman Nicobar, Sunda land बोलिए को कहूचे। The fourth one Sunda land, not Sundarland, Sunda land। तो इथरे क्वेश्चन पड़े कि सबुठु बड़ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया रा कोटा, वेस्टर्न घाट इज द मोस्ट बिगेस्ट। एंड वेस्टर्न घाट जेहेतु सबुठु बिगेस्ट याको प्रोटेक्शन करिया पे दीटा कमिटी भी अछि। फर्स्ट थिला माधवगढ़ कमिटी, ये कमिटी बहुत स्ट्रिक्ट थिला, बहुत रफ एंड टफ थिला। एतमे याको मॉडरेट करिया पे नेक्स्ट कमिटी याको असला कस्तूरी रंजन पैनल। बट ओवरऑल द थिंग इज वेरी क्लियर, वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन पई टोटल केतरा कमिटी, माधवगढ़ गिल एंड कस्तूरी रंजन कमिटी। And this also we have discussed in our classes, conservation of biodiversity। तो in situ, in माने internal, in माने natural, x माने extra, extra में कोठो आणले जदि हमें artificially तैयारी करियो, तो artificially these are the list, in situ naturally these are the list। तो very simple friends, एथिरे हमको क्वेश्चन आसे आपण चारटा ऑप्शन देथिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एक्स सितु। एक्स माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा माने आर्टिफिशियली। सो दिस जू, नंदनकानन, बोटानिकल, जीन गार्डन, ए सब जगह जिंस एक्स सितु। सो दिस लिस्ट आई हैव गिवन, इवन द लिस्ट इज मोर, इवन मोर। हेलो, हाँ सर, अच्छी तो ऑडिबल? हाँ सर, यस सर। ओके, ठीक अच्छे। हाँ, तो कोटा एक्स सितु रे जाए, कोटा इन सितु रे, एटा भी गोटे क्वेश्चन पड़े। सो बायोस्फीयर रिजर्व हमरो इंडिया रे केतरा अछि? 18 टा अछि। बायोस्फीयर रिजर्व रो फ्रेंड्स तीनटा क्वेश्चन पड़े। हम इंडिया रो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व होछि नीलगिरी। सबडो बड़ बायोस्फीयर रिजर्व अछि गुजरात रो रण ऑफ कच्छ। आ तमिलनाडु रे जो दीटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि, गोटे होछि हमरो नीलगिरी, जोटा को हमें फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहउछि। केबे हेइथिला से डेट भी देखि नेबे। प्लस इंडिया रो एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जोटा कि समुद्र कूलिया अछि, और द ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, सो गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, सो एटा भी तमिलनाडु अछि। तो बायोस्फीयर रिजर्व ए तीनटा ही देखिबे। नेशनल पार्क हमर अछि 104, एबे बढ़ी गेलानी 106 हे गेलानी। ओके, तो नेशनल पार्क रिलेटेड हमर कोन क्वेश्चन आसी पारे? प्रथम नेशनल पार्क कोटा? ऑब्वियसली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ता ना चेंज हे कि एटा को जिम कॉर्बेट और हेली नेशनल पार्क भी कहथले, किंतु एबेरा ना चेंज हे कि रामगंगा नेशनल पार्क हे गेला। एटा आपण जानि चंती। तो नेशनल पार्क इंडिया रे सबठु बिगेस्ट और लार्जेस्ट और हाईएस्ट नेशनल पार्क एटा होची हेमिस नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा ठीक अछि, इट्स ओके। हमरो 536 टा अछि, आगो भी बढ़ुछ। किंतु क्वेश्चंस हमरा से प्रोजेक्ट टाइगर डायरेक्ट डेट उडा मन रखिबे। 73, क्रोकोडाइल 75, हाथी 92, स्नो लियोपार्ड 2009, लायन और डॉल्फिन एबे रिसेंटली इंक्लूडेड हेचंती 2020।
किछि important conservation related to some organization convention or institutions तो देखंतु गोटे WWF थिला ए बड़ा पिटा WWF नहीं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यार लोगो होची ब्लैक एंड व्हाइट पांडा एटा भी ऑलरेडी क्वेश्चन रे पढिची so this WWF it releases a report that report name releases two report living planet index and ecological footprint कौन तो फ्रेंड्स एटा भी ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़िची दी थरो पढ़िची गोटे डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को को थरे मेजर करे व्हाट इज द यूनिट इज ग्लोबल हेक्टेयर सो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कंजप्शन एंड डिमांड्स इन नेचर टू जनरेट द रिसोर्सेस अरे किछि नै एटा गोटे जंगल मनुष्य जाउची एटी गछ तोड़ला एटी काठ हाणला तो मनुष्य जति सब चली चली जाईची रास्ता सब करिची एडो को हमें कहउचे फुटप्रिंट ता पाद पकेची सो मनुष्य जति कि ह्यूमन कंजप्शन नेचर डिमांड जदि एटो काठ पाठ नहीं गलो पुणी सेठी किंति ठाकुर पुणी आउथरे गछ करिवे कि वर्षा हबो सेठी नेचर बैलेंसेस इटसेल्फ सो दिस इवेंट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटेड इन ग्लोबल हेक्टर केना बहुत फॉरेस्ट माने बहुत एरिया में कवर करके जाउछे बहुत एरिया ग्लोबल हेक्टर्स इज कन्वर्टेड इन ग्लोबल हेक्टर्स तो दीटा देखो क्वेश्चन पढिछि वी विल सी द क्वेश्चंस नो प्रॉब्लम गोटे होचे साइट्स गोटे होचे ट्रैफिक तो ए दीटा जगह रे ए दीटा कन्वेंशन दीटा इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपण देखिबे कि हमें किछि इंटरनेशनल ट्रेडिंग करूचे बट it is supporting wildlife flora and fauna and it is supporting only wildlife trade so it is a monitoring network gote desaru a gote deso jodi kichi animals mane asile then it will be look after in traffic otherwise all types of events will be agreed between intergovernment it will come under sites both are government approved IUCN ame janiche full form jani chandi apano produces the and list of endangered books that is also known as red data book or red list this also you know United Nations environment program environment Nairobi headquarters is in Nairobi अब एटा में देखिथिले फ्रेंड्स ऊपर CBD रो फुल फॉर्म थर्ड एम रे दीटा प्रोटोकॉल थिला नगाय एंड काटेचिना ओके ए पेजटा और टिके परे देखियो आसंतो ए पेजटा गुटे देखिदवा एटा लास्ट पेज ता ऊपर देखिदवा देन विल हैव अ लुक टू सम क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन देखिवा if you want to boost confidence you can look to the previous year question if you are interested I will show you the questions yes sir ठीक अछि एटा टिके सार दबा एटा just give me 5-10 minutes more we'll look into it atmosphere देखंतो क्वेश्चन पढिछि कि ह्यूमन रो ऑडिबल रेंज केते 20 हर्ट्ज रो 20000 हर्ट्ज ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग पढिथिला 20 हर्ट्ज रो 2000 हर्ट्ज 2 लाख हर्ट्ज रिमेंबर so this is given in hertz and this is given in decibel CPCB Central Pollution Control Board established ହେଇଥିଲା 74 रे यार दीटा ऐप अछि सफर एंड समर ऐप व्हाट फॉर सफर एंड व्हाट फॉर समर इज कंसर्न्ड एटा एरोजोल्स पई एटा एयर क्वालिटी माने सपोज हमें दिल्ली बुली जिवु दिल्ली रो क्लाइमेट केमती अछि मो छुआ मानको पई बेटर होबो न होबो ना क्वालिटी ऑफ एयर इज वेरी पुअर सो wherever you want to go to visit in entire India just install suffer and जानी परिवे कि जो जगह बुली जिवे से जगह वेदर रिलेटेड किमिति एयर क्वालिटी अछि समर एटा एरोजोल्स मॉनिटरिंग रिसर्च जति भी सब एरोजोल्स स्प्रे होची किंबा डेवलप होची किंबा पोल्यूशंस होची तो तार केते परिमाण रे होची सेटा सब जानिया पे समर ऐप इज देयर now PM 2.5 PM 10 ए दिटा इवेंट इज रिलेटेड टू पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोट छोट जिंस जेंती ना फॉर एग्जांपल को जगह रे गोटे कंस्ट्रक्शन चालूची बहुत धूली होची कि को जगह रे निया लागिला सो निया एते धुआं होची हमको दिसुची कहीं ना नियार पार्टिकल टिके बड़ तो को जगह रे किछि जदी किछि गोटे पंजेंट स्मेल हैला से स्मेल हम आखी को दिसुनी बिकॉज़ इट इज वेरी स्मॉल सो तार माइक्रोन्स बहुत छोट तो आमे एमती रास्ता रे गाड़ी चलेगी गले केते जगह रे पोल्यूशन होची आमे निश्वास नउची आमे जो निश्वास नउचे जो निश्वास आमे नउचे से निश्वास रे जदी आमे छोट छोट
किछि हमें आम आखि रे देखा जाउनी से पॉल्यूटेंट आम आखि भितर गले सेटा बहुत छोट माने सेमानक डायमीटर बहुत छोट तो सेटा हमर जीवे 2.5 तो पीएम 2.5 माने कोन ना दोज pollutants whose diameter is less than 2.5 micrometer. Similarly, को जगह इंडस्ट्री फायर हेगला धुआं जळुची धुआंटा हमको दिसुची तो पार्टिकल्स बड़ तो सेठी हमर डायमीटर केते लेस देन 10 माइक्रोन्स तो सही इवेंट रे दीटा क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन आसीथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस देन 2.5 माइक्रो डायमीटर सो 2.5 अछि माने 2.5 ही आंसर हो दैट वी विल आल्सो सी सो डिजीजेस एटा होची लिस्ट ऑफ डिजीजेस कोटा शॉर्टेज हेले को प्रकार रोग हबो ए नाइट्रेट हेले ब्लू बेबी सिंड्रोम ताबल ये नहीं कि छुआटा ब्लू हो गला माने रामचंद्र जन्म हो गले ब्लू बेबी सिंड्रोम हेची माने एक्सेस नाइट्रेट हेची ओके एसिड रेन हबार कारण एसओएक्स एनओएक्स रो परिमाण बढ़ी जीवो ओजोन ऊपर देखि नियंतो हमर तीनटा क्वेश्चन आसे गोटे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन जदी एटा ओजोन अछि ओजोन रो डायमीटर होची 3 mm ओजोन होल आमे जो कहूचे एमती जीव गोटे कणा हे जीव सेमती नहीं जो जगह रे एटा होची ओजोन 3 मीटर तो को जगह रे जदी ओजोन रो लेयर टा कमी जाईची सपोज इफ द ओजोन width is less than 1 mm then we will say there is a ozone hole but that doesn't mean ओजोन टा कणा हे जाईची ओजोन होल concept comes through if diameter is less than 1 mm so ओजोन रो यूनिट कोन फ्रेंड्स एटा भी पळे आसे डॉप्सन यूनिट केमती कोन हमें भाबुचे ओजोन होल केबे हबो ओजोन होल ना जदी 200 रु 220 डॉप्सन यूनिट अछि ताहले ओजोन लेस देन अछि ओजोन होल कहि परिबा प्रथम थर कोठी देखिया को मिलथिला अंटार्कटिका रे देखिया को मिलथिला तो वेरी सिंपल थिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैसेस रे फ्रेंड्स टोटल 4टा क्वेश्चन फर्स्ट 3टा क्वेश्चन मुठी लिखि देछि को ग्रीन हाउस गैस प्रचुर मात्रा रे अछि अबंडेंटली वाटर वेपर कहार एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम सबुठो अधिका CF4 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को ग्रीन हाउस गैस सांघातिक जार बहुत अधिका औकाद ओजोन होल को हैम्पर करया पई एनवायरनमेंट डिग्रेड करया पई दैट गैस इज कॉल्ड सुपर ग्रीन हाउस गैस दैट गैस इज नोन एज SF6 द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस इज हमको लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कौन जानिया को पड़िबो जेमते CO2 NO2 मीथेन SF6 water vapor so these are greenhouse gases the question पड़े से which of the following is not a greenhouse gas a CO carbon monoxide is not a greenhouse gas oxygen is not a greenhouse gas nitrogen single is not a greenhouse gas okay so there are things which comes directly लॉलीपॉप भलिया लागिवो बट एंडा न जानिथिले कष्ट हे जिवो तो एथरे ए क्वेश्चन भी थोरे आस्तिला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड प्लस तो देखंतु जब एनवायरनमेंट पे मीटिंग हुए दैट इज कॉल्ड COP11 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11th रे मॉन्ट्रियल रे मीटिंग हेतिला गोटे कंपोनेंट बाहरतिला रेड कोन डिसाइड हेतिला नाउ वी हैव टू रिड्यूस एमिशंस reducing emissions from deforestation reducing emissions from deforestation in developing countries जो जगह developing countries for example India ए जगह एटलीस्ट जो इंडस्ट्रीज एक्सपांशन पे फॉरेस्ट उडा डिफोरेस्टेशन न करा जाऊ एवडा को सब चेक करेबो कि जदी भी हे गेला जदी को जगह सिटी एक्सपांड होला से जति की भरपाई करियार अछि आ गोटे जगह करा हो रेड तापरे मन को मुंडरे चेता पसला अरे नहीं नहीं खाली फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन कोन फॉरेस्ट रो डिफोरेस्टेशन में गछ काटी देलो किंतु फॉरेस्ट जो धीरे धीरे नष्ट हो जाउची दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट so deforestation तो ठीक अछि सडन काटी देलो कि डिग्रेडेशन slowly so they have to change this name as red plus अरे आज्ञा हम छाड़ देथिलो deforestation of forest so full form of red plus reducing emission from deforestation and degradation of forest it is adopted in COP12 or Bali declaration कार्बन क्रेडिट माने को जगह रे अधिका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होची तो तमे कार्बन ट्रेडिंग भी करि परिबा तो सपोज यूएसए बहुत अधिका कार्बन एमिशन करिची सो इंडिया रे से किछि फाइनेंस करिवो इंडिया रे गछ पत्र लगेबो सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन क्योटो प्रोटोकॉल लिस्ट डेवलप्ड कंट्री गोटे डेवलपिंग कंट्री को केमिति सहयोग करि परिबो एनवायरनमेंट रिलेटेड सो दैट किना बिक्रा is known as carbon credit we have also question related to carbon credit
न्यूट्रलिटी माने CO2 जेतिकी जाउची तमे सेतिकी CO2 एटमॉस्फेयर रे कैप्चर भी करिकी करि दउछ माने टोटल एमिशन इज इक्वल टू कैंसलेशन टोटल माने लॉस जीरो नेगेटिव ना CO2 तमर जहा एमिशन होउची तमर स्टोरेज आहुरी अधिका होउची माने तमे सरप्लस रे अछ ऑफसेट ए जो किना बिकरा मन रखंतु 1 क्रेडिट ऑफ कार्बन इज नोन एज 1 टन ऑफ CO2 एतिकी कैलकुलेशन रे जाए ओके वन यूट्रोफिकेशन रो क्वेश्चन आसे हमरो चारि पांचटा क्वेश्चन आसीची यूट्रोफिकेशन रो फ्रॉम दिस इवेंट एथरो हमको डायरेक्ट 3 वर्ष जाए कंटिन्यूअसली रिपीटेडली क्वेश्चन पढ़ी सो बायो रेमिडिएशन बायो एक्युमुलेशन सो एटा कोन टिके देखि दबा यूट्रोफिकेशन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फ्रेंड्स ना सपोज एठी हमरो पानी अछि समुद्र पानी हो कि पोखरी पानी हो तो डेफिनेटली किछि सूर्य किरण गले आ एठी तळ अछि ग्राउंड लेवल अछि एठी माछ माने अछंती खेलुचंती ऋषिराज कोन टिके टाइप करछो हां मीट कर दियो तो माछ माने जो खेलुचंती आंको पाके सूर्य किरण पहुंचुची किंतु कोठी इंडस्ट्री अछि कोठी पोल्यूटेंट होची चाष होची ए माने जो सब इंडस्ट्री पोल्यूटेंट सब खराब पानी छाडुची खराब पानी को नळा नळा को बड़ नळा को समुद्र समुद्र एमते हे कि नदी फदी रे जेबे ए ब्लू कलर रे कली पोल्यूटेंट्स उडा डिपोजिट इंडस्ट्री रो वेस्ट डिपोजिट हे गला तो इंडस्ट्री वेस्ट उडा जो डिपोजिट हला कोन प्रॉब्लम हबो the problem is सूर्य किरण will not find its way to enter सूर्य किरण पसिबेनी सूर्य किरण न पसले एट जो ऑर्गेनिजम्स माने थिबे मरि जिवे फटकिने तो मरिबेनी ए ऑर्गेनिजम्स माने धीरे धीरे ऑक्सीजन कम पाइबा ऑक्सीजन को हमें कहूचे हाइपोक्सिया कम पाइबे सेथरे भी ऑर्गेनिज्म बढ़िबे तापरे किछि इमती आसीबे इवेंट कि ऑक्सीजन ही पाइबेनी सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी किछि ऑर्गेनिजम्स बढ़िबे सेटा को हमें एमनोक्सिया बोली भी कहूचे सो हाइपोक्सिया होची धीरे धीरे ऑक्सीजन कमी जीवो एमनोक्सिया पूरा जीरो हो जीवो तो भीतर जदी ऑक्सीजन ही जीवनी ए टोटल जोन टा हमरो डेथ जोन बोली डिक्लेयर हे जीवो ए टोटल डेथ जोन को हमें कहूचे एल्गल बूम टोटल डेथ जोन को हमें कहूचे एल्गल बूम तो ये जो एंटायर एरिया टा भीतर पोखरी हो कि नदी हो समुद्र हो टोटल जो डेथ जोन टा हे गला यार कारण अल्टीमेटली हमें काहा को दोष दबा दोष होची कि इंडस्ट्रीज रो जो पोल्यूटेंट्स आसिले एउडा होचंती कारण ना वर्तमान जो इंडस्ट्रीज रो पोल्यूटेंट्स माने आसिले पोल्यूटेंट्स माने एक्सेस भी आसी परिबे मॉडरेट भी आसी परिबे लेस भी आसी परिबे सो सही इवेंट को नेकी होची या कि जदि लेस न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट हेले सेटा को हमें कहबा ओलिगोट्रोपी मॉडरेट मेसोट्रोपी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स यूट्रोपी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स यूट्रोपी जोगु हमर नाटा पडला यूट्रोफिकेशन एटा भी क्वेश्चन रे पडिची सो ए जिनसटा मु जस्ट कहली डेथ जोन टा क्रिएट हे गेला तळे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हेले हाइपोक्सिया एब्सेंट हे गेले एमनोक्सिया टोटल मिसे देले एंटायर मृत्यु जहाज समुद्र रे एडे एडे समुद्र रे जो जहाज आछी ऑयल सिलिंडर्स ऑयल टैंकर्स रो ऐसे जदि जहाज एक्सीडेंट हे गेला कि लीकेज हे गेला ए तेल उडा जेबे फ्लोट हे जाए एबे करंट अफेयर्स से पढ़थिले को देश हैज डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी पेरू फूड इमरजेंसी श्रीलंका पेरू केना पेरू रे ऑयल स्पिल हे जायतिला तो ऑयल स्पिल हेला कोन एटा समुद्र समुद्र रे जदि तेल उडा भासिला धन्य तो ऊपर फ्लोट हेला तो तेल ऊपर फ्लोट हेला माने समुद्र ए जो सूर्य किरण एटा पसिबेनी ठीक से न पसिले एठी करे डेथ जोन हे पारे सो ए जो जिंसोडा पसिले जिंसो को हमें केमिति रिजॉल्व करबा तो एठी कोन हेला ए जो तेलोडा डिपोजिट हे गले माने एक्युमुलेट हे गला एटा को हमें कहछे बायो एक्युमुलेशन एथरे दी थर क्वेश्चन पडिची द टोटल congregation or collection of nutrients in ocean surface is known as accumulate hela bhai accumulation आ जदि एक्युमुलेट हला यार सॉल्यूशन कोन आमे किमिति करी कि याको पार्ट बाय पार्ट करी भांगीबा ये ब्रेक हबो तापर आहुरी ताको ब्रेक करियो माने यार सॉल्यूशन किमिति आमे याको रेमेडी करी परिबा दैट इज नोन एज रेमेडिएशन सो टू थिंग्स डिपोजिट हला एक्युमुलेशन रेमेडी हला रेमेडिएशन किमिति कोन रेमेडी करी परिबा वी हैव टू कंट्रोल वी हैव टू स्प्रेड डिस्पेरेंट्स ओलिजैपर और ओलिवरस ओके ए ओलिवरस आईओसीएल कंपनी हमर बाहर करछि कोरल ब्लीचिंग
coral bleaching be related to that event. So एठी हमें questions देखिबा particularly corals रू. Coral टा actually देखिया को see if you will see this as a coral, एटा गोटे coral, किंतु यार जो गोटे portion अपन देखिबे individual coral को हमें कहूचे polyp. Coral कोन? A group of polyp, a class, a phylum, nocturnal रात्रे काम करबे, invertebrates, symbiotic relationship with algae. एटा गोटे प्लांट अछि, एसे जदि कोरल अटैच हे कि रहिला एक्टिव अछंती त माने से माने ग्रीन कलर, किंतु जदि कोरल्स तांको छाडी कि पळेला, सॉरी माने प्लांट्स छाडी कि माने प्लांट्स ऑफ फूड देबेनी, कोरल्स डेड हे जिवे. कोरल्स डेड हेले को कलर व्हाइट हे जिवो. व्हाइट हेले कोन प्रॉब्लम? कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करिवो, CaCO3. CaCO3 रिलीज कले कोन हबो ना, जोठी दिन थिला बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट थिला, CaCO3 लाइम सिक्रेशन करिकि से एरिया को पोल्यूट करिवो. एतिके नाही, कोरल्स रो साइज भी होची हमरो 1 to 3 mm. वार्म वाटर 21 to एतिके होची कोरल रो टेम्परेचर. सो क्वेश्चन भी गोटे टेम्परेचर कंट्राडिक्टरी पड़ी थिला, बट राइट आंसर इज बिटवीन एतिकी. एसिडिक पानी अच्छी तो कोरल्स ग्रो करिवे, वार्मर पानी अच्छी तो कोरल्स टेंशन हवा स्टार्ट करिवे. कोरल्स अंडर प्रेशर, कोरल्स अंडर स्ट्रेस लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग. क्योटो प्रोटोकॉल रे केवल एतिके मन रखंतु 1997 एडॉप्ट हेतिला. यार पर्पस होची टू डिक्रीज एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन. फेज 1 रो टारगेट थिला एटा, फेज 2 रो टारगेट 2020 जाय, जोटा ओवर अप हे गलानी. तो लाइक दैट एतरे जति कि मु आपन को कहिचे सेतिक रे आपन जस्ट रिवाइज करि नेबे. एतिक रे आपन एटलीस्ट 90% क्वेश्चन यू कैन आंसर. वी विल सी हमें जति कि पढले कि हमें एक्चुअली रे केते क्वेश्चन हमें करि पारुचे. So let's have a just look to some previous year question. Class is recorded, so no issues. You can revisit this. Okay. आसन देखिबा हमें केते क्वेश्चन करि पारिबा. Okay, question number 70. Now you will see your answers from your side. Well, 70. Option D, sir. पढ़िथिले ना, just IUCN releases red data book list of endangered species. Okay. 71. IUCN headquarter, very simple. Gland, Switzerland. 72. WWF को जंतु को रखा हैथिला? पांडा, giant panda. Giant panda. Giant panda ना red panda? Giant panda. Red panda, cute panda इनती के नांती है ला. 73 टा पढ़िले. 73 कौन आंसर देवे? Biomagnification. Simple. Pesticides, DDT अधिका स्प्रे हेगला, अधिका हेला से biomagnification. Simple. इंडिया रो को स्टेट किंबा यूनियन टेरिटरी रे अधिका परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव गछ अछि? किछ न पड़ी परिबो. West Bengal. West Bengal. West Bengal. Single one. हाँ. क्वेश्चन नंबर 80 भी आपण जानथिबे हला. अच्छा 86. 86. Yes. Yes or no? Yes or no? B. 94. All of the above. All of the above. All of the above. Excellent. 67. 67. भाभी कहबो. तीनटा पछला, ग्रीन हाउस गैस, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन. ओजोन अधिका डिप्लीट किए करबो? CFCs. Option D, sir. नहीं, A हबो बोले. नहीं, causing greenhouse gas effect ना, हमको मोस्ट abundant greenhouse gas के तो पचरनी.
हाँ Option सर B. अधिक किए करे CO2 आउ एसिड रेन पे आइदर SO नहले NO NO तो नहीं SO तो CO2 SO2 CF6 Option D, sir. क्लियर हाँ 78 देखंतु तो थीम भी पढुची हां तो जो वर्षर थीम सेटा आपण भी देखि कि ने दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 लायन टेल्ड मॉस्किटो एटा को ये नीलगिरी की नीलगिरी बुझिबा 22 CFC कोन होबो CFC obvious CFC 28 B 97. Option B, 97. 97. 37 disinfectant okay disinfectant. silviculture 34 34 कौन कहबो herb ना grasses Herbs. Herbs, sir. herbs 45 IUCN. IUCN B. सिंपल क्वेश्चन जेमिति भी आसो तमे कांसेप्ट जानि छ पूरा सीना ठोक के आंसर दबो ओके ठीक अछि आगो बढ़ियो मैं क्लास रे करैथिली आ डिटेल्स चेक दरकार ए जो 58 को करैथि